नाउ अनदर, अगर आप देखें तो हम IoT इंटरनेट की अगर बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग डेटा. So obviously we need the analytics and the data management. So another component here we are talking about the IoT analytics and the data management. This is used to make sense of the large amount of data being processed. Various, so the IoT technology drivers, which we will talk about further, IoT technology can compute all the raw data being collected and transported into a data analytics, which provides actionable insights and real-time solutions that can be used for effective decision making. Real-time analytics or real-time solutions for the effective decision making का कोई एग्जाम्पल बता सकता है? सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल फ्रॉड डिटेक्शन में, फ्रॉड हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, राइट? सो फ्रॉड रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू, रियल टाइम सॉल्यूशंस के थ्रू जो एनालिटिक्स परफॉर्म हो रहा है, डेटा प्रॉपर मैनेज हो रहा है, वो आप हैकर्स को और फ्रॉड को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. सो सबसे important analytics or data management का यहाँ पे ये है. Now the another component here we are talking about the devices and the interfaces. Definitely we need the interface. Definitely somewhere we have talked about the connectivity, we have talked about the cloud, everything is on internet. We are talking about we need the devices. So this is visible component that an IoT user can use to control a system. जैसे आपने यहाँ पर अपना वाईफाई का डिवाइस लगा रखा है and set their preferences. This interaction is usually conducted on the device itself or remotely with the smartphones, tablets, or the laptop. So I am using a laptop, you are using a laptop, all the devices and the interfaces we are talking about.